Hello everyone students. Today we will start our fifth chapter, acids, bases and salts. So in this chapter we will learn about the acidic substance and the basic substance. Okay. Then now curd, lemon juice, orange juice, all these substances are taste in sour. कैसे रहते हैं वो टेस्ट में? sour in taste. Means the substance which are taste in sour because it contains acid. All the acidic substances are sour in taste. Okay. The chemical nature of such a substance are known as acidic substance. Okay. And the substance which are in bitter in taste are known as a basic substance. Okay. So what is the difference between acidic substance and basic substance? Acidic substance are which in taste? They are in sour taste. वो कैसे रहते हैं? खट्टे रहते हैं. And basic substance are they are bitter in taste. Bitter means what? कड़वे. Okay. So and another thing of basic substance, if you will touch that basic substance, you will feel that soapy on touching. Okay, soapy रहते हैं वो. So these are known as the basic substance. Okay. And now tell me how we can identify whether the substance is acidic or basic. हम कैसे identify कर सकते हैं substance को? It is not necessary कि we can taste every time we can test them. ऐसा नहीं हो सकता. It's not possible that we can test them. So the substance which find out that the substance is acidic or basic are known as indicators. So with the help of indicators we can find out the substance is acidic or basic. Okay, means हम इंडिकेटर के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. ओके, सो व्हाट आर द इंडिकेटर्स? There are some natural indicators are also available. Which are the natural indicators? Like the turmeric, litmus, China rose petals. Okay, so these are the some naturally occur indicators जिसको कहते हैं natural indicators. Okay, now see the on page number 50 there is one table is given. Okay, so on in that table what is given, students? In that table some of the names of acid and some of the names of base are given, and where that acids and base are found, in which substance they are found, it is given. Okay, so let us read that table. Okay, first one is the acetic acid. Where it is found? Acetic acid is found in vinegar. Okay, फॉर्मिक एसिड इज़ फाउंड इन एंड स्टिंग्स. एंड स्टिंग्स मीन्स जब हमें कोई एंड चींटी काटती है उसके काटने में जो एसिड हमारे बॉडी में आता है दैट इज़ द फॉर्मिक एसिड. ओके, देन साइट्रिक एसिड विच फाउंड्स इन साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस, लेमन्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो. ओके, लैक्टिक एसिड विच इज़ फाउंड इन कर्ड में रहता है. ऑक्सैलिक एसिड विच इज़ फाउंड इन द स्पिनैच में रहता है. एंड एस्कॉर्बिक एसिड इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीन्स विटामिन सी. इट इज़ फाउंड इन सेम दैट fruits like amla and citrus fruits. Okay, then tartaric acid is found in the tamarind, जो इमली होती है उसमें, grapes, unripe mangoes, etc. So, okay, so these are the substances in which these kinds of different acids are found. Okay, so this is all about the acids. But now what is about the base? कहाँ पे फाइंड होते हैं? देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेस आल्सो अवेलेबल. कौन से बेसिस होते हैं? लाइक द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेसिस अवेलेबल. एंड वेयर इट इज़ फाउंड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वेयर इट इज़ फाउंड? इन लाइम वाटर. ओके, लाइम वाटर में रहता है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इट इज़ फाउंड इन विंडो क्लीनर जो सॉल्यूशन होता है जिससे हम विंडोज़ क्लीन करते हैं. सो इन दैट सॉल्यूशन दैट अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ फाउंड. ओके, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन सोप. Understood? And the last one, that is the magnesium hydroxide, is found in the milk of magnesia. So these are the different kinds of bases are found in the
different substances. Okay, so you have to remember all these names of the acids and bases. I know that these names are new for you, आपके लिए थोड़े से new हैं, so you have to remember its names along with its correct spellings. Okay, so prepare this chart very well and write in your rough copy also. Understood? Our next part we will see about the natural indicators. Which are the natural indicators are around us? So we will see in that our next part. Okay.